Hello and a very good morning to all of you. I welcome elective English students as well as my viewers on YouTube. And as you all aware, by now you are all familiar with me, an English teacher from AMU Akhlaq Ahmed. Now, in today's video, we will take up Ode to a Nightingale. And first, I will dictate you the meanings of difficult words, and then, if we get time, we will also, I'll dictate you the theme and difficult, sorry, I'll introduce the poem and discuss the theme with you because it requires a lot of introduction and background. Only then you will be able to understand and grasp it completely. So, first, please note down the words quickly. The first word is aches. A-C-H-E-S, aches. I'll give you the implied meaning, not the literal meaning of the word. So, aches implies pains because of excessive joy. Pains because of excessive joy. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़ पे आप उंगली रखें तो वो सुन्न भी हो जाती है, लेकिन ठंडापन आपको सुन्न होने के बाद भी महसूस होता है. ये एग्ज़ाम्पल तो बाद में ज़्यादा रेलेवेंट होगी, लेकिन ये पेन्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जॉय यानी यहाँ पे पोएट ने कहा है माई हार्ट एक्स, यानी ये दिल में जो दर्द की बात है, तो ये दिल जो है ये बिकॉज ही फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी, सो ये इसको एग्जैजरेट करके यहाँ पे कहा है. नेक्स्ट वर्ड है ड्राउजी. D-R-O-W-S-Y, drowsy, which means sleepy. Then we have numbness. N-U-M-B-N-E-S-S, numbness, which means insensibility. मतलब to numb is to benumb, यानी सुन कर देना. numbness उसी से बना है. So when the poet's senses become numb, यानी अब वो मिसाल जो मैं आपको पहले दे रहा था, जैसे कि ये सेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएं, उनकी पावर्स बढ़ जाएं, तो वो सुन से पड़ जाते हैं. यानी कि जैसे बर्फ़ पे आपने हाथ रखा, बर्फ़ जाहिर है कि हाथ ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में आपको वो सुन हो जाएगा. हाथ आपका नम करने के लिए, सुन करने के लिए आइस भी इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में, लेकिन ठंडापन आपको महसूस होगा. तो यहाँ पे भी वही आइडिया है कि ड्राउजी नमनेस पेन्स, यानी कि ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंसेस, मतलब मेरे सेंसेस जो हैं बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स वो फील करता है, और उसकी वजह से वो डेड से हो जाते हैं. अच्छा, सेंस से यहाँ पे मतलब है 5 सेंसेस, द 5 सेंसेस. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हेमलॉक. H-E-M-L-O-C-K.
Hemlock is a poisonous plant. A poisonous plant. Its juice produces sleep और dullness. यानी एक तरह का पौधा होता है जिसकी ड्रग बनती है. वो ड्रग ले लें तो उससे ड्राउजीनेस आ जाती है, स्लीपीनेस आ जाती है. नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टीड. EMPTIED, emptied. Emptied here means drunk or emptied the cup by drinking its contents. Opiate. Next word है ये opiate. 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 It's a kind of a drug. Prepared of opium, which makes senses dull. Then the next expression is to the drains. DRAINS. To the drains. This means to the last drop or completely. The next expression is leadwards. LETHEWARDS. Leadwards means towards lead. अब लीड किसे कहते हैं वो लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है. लीड आप बुक में भी दिया हुआ है लेकिन आप भी नोट कर लें. लीड इज अ रिवर इन हेडीज. HADES. Hades. Or the underworld. In Greek mythology, its water produces forgetfulness. यानी ऐसा माना जाता था कि इसका जो पानी पी लेता था वो अपने अर्थली एग्जिस्टेंस को भूल जाता था. Envy. Envy means jealousy. Next expression, happy lot. This means happy life or happiness. Happy life or happiness. Then we have dryad. 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 ये भी बुक में दिया हुआ है लेकिन लिख लीजिए. इट्स ए ड्राइड मतलब a fairy of the woods. A fairy of the woods. The Greeks believed that the trees were inhabited by nymphs.
NYMPHS, nymphs मतलब फेरीज. nymphs full stop. अब नेक्स्ट वर्ड है मेलोडियस. MELODIUS, मेलोडियस. इसका मतलब है फुल ऑफ मेलोडी और म्यूजिकल. Then the next word is plot, which means place. अच्छा. Next word is beachen, BEECHEN. इसके माने होते हैं ऑफ द बीच ट्रीज. ऑफ द बीच ट्रीज. ऑफ द बीच ट्रीज. अच्छा. बीचन ग्रीन, ये एक और एक्सप्रेशन है. बीचन ग्रीन, BEECHEN GREEN, बीचन ग्रीन. अब इसका मतलब समझ लीजिए, नोट कर लीजिए. द प्लॉट इज green with the beech trees which grow there in large number. In large number. Full stop. Next expression है off summer. Off summer. This means song of summer. अच्छा. अगला एक्सप्रेशन है full throated ease. Full throated, THROATED. फिर नेक्स्ट वर्ड है EASE, ease. Full throated ease. इसके माने होते हैं in the most spontaneous way. In the most spontaneous way. Or in a natural tone. In a natural tone. Next word is draft. DRAUGHT, drought. ड्रॉट के माने होते हैं क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड टेकन एट वन टाइम. टेकन एट वन टाइम यानी एक घूंट जिसे कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज विंटेज. VINTAGE, विंटेज. विंटेज मतलब ओल्ड वाइन. ओल्ड वाइन. अच्छा. अब ये एक एक्सप्रेशन है कूल्ड अ लॉन्ग एज. मैं आपको इसमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी छोटे छोटे लिखाता रहूँगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए. कूल्ड अ लॉन्ग एज. इसके माने होते हैं प्लेस्ड इन अ डीप पिट for a long time. For a long time. अच्छा. Next expression is deep delved earth. Deep delved, DELVED, delved earth.
इसका मतलब है डीपली डग अर्थ। डेल्व के माने होते हैं टू डिग। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ, TASTING, टेस्टिंग ऑफ, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो मीनिंग है गिविंग द टेस्ट ऑफ, दूसरा है रिमाइंडिंग ऑफ। बोथ मीनिंग्स अप्लाई। वो जब हम पोएम्स डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा। यानी उसका टेस्ट कुछ ऐसा है जो उसे कुछ याद दिलाएगा फ्लोरा, फ्लोरा की, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा। तो इसका मीनिंग है इन ग्रीक माइथोलॉजी फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा मीन्स a taste of wine that will transport the poet, that will transport और transfer आप कह लीजिए, transport तो समझते ही हैं, transport the poet into the valley of flowers, into the valley of flowers. अच्छा, the next expression is country green. country green इसके माने होते हैं countryside which is green with vegetation, vegetation. Next expression is Provençal, PROVENCAL। इसको प्रोवेंकल नहीं कहते बल्कि प्रोवेंसाल कहते हैं। ये बुक में भी दिया हुआ है आपकी, लेकिन इसको भी नोट कर लीजिए। ऑफ प्रोवेंस, इट मीन्स ऑफ प्रोवेंस, PROVENC, which is a region in southern France known for its folk songs and dances. And dances. Mirth. Next expression is mirth, MIRTH, mirth. Means joy, joy or cheerfulness. Next expression is sunburnt mirth. ये पूरा एक phrase है, SUNBURNT, sunburnt mirth, MIRTH, mirth. sunburnt mirth. इस पूरे phrase के माने हैं a happiness that spreads on the face while enjoying
the warmth of the sun, the warmth of the sun. अच्छा, नेक्स्ट है बीकर, BEAKER, बीकर मतलब a large cup, a large cup. Next expression is warm south, warm south, SOUTH, warm south. इससे जो मतलब है वो नोट कर लीजिए, वाइन फ्रॉम some southern region, southern region, full stop, south of Europe, is comparatively warmer, यानी नॉर्थ यूरोप के मुकाबले में साउथ यूरोप जो है वहाँ पे कंपैरेटिवली वार्म वेदर रहता है, हॉट तो नहीं, वार्म रहता है, यानी सर्दी नॉर्थ यूरोप में ज़्यादा पड़ती है. सो साउथ ऑफ यूरोप इज़ कंपैरेटिवली वार्मर एंड द वाइन of the southern region will be more intoxicating, Next word is true. True का मतलब है यहाँ पे genuine. अच्छा, blushful. This means full of red color, of the wine which also appears on the face of the person who drinks it. अच्छा, ब्लश के माने अलग से लिख लीजिए तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा. ब्लश मीन्स, as a verb it means become red in the face, with shame or other emotion. Or as a noun it means reddening of the face due to shame etc. अच्छा, blushful जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, it is used to describe the wine. Blushful, hypocrine मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है. Basically the wine is described as blushful, yani full of rich red color, which also appears on the face of the person who drinks. Now hypocrine, HYPPO, sorry, HIPPO CRENE. ये भी बुक में दिया हुआ है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं. मैं बता रहा हूँ. A mountain
sorry, a fountain, on Mount Helicon, 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 which is sacred to the muses, MUSES, muses से मतलब फाइन आर्ट्स, which is sacred to the muses, मतलब ये माना जाता है कि जो भी आर्टिस्ट होता है, म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, पोएट हो, वो इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, हिपोक्रेन से। देखिए, वन हु ड्रिंक्स फ्रॉम इट, प्लीज नोट डाउन, वन हु ड्रिंक्स फ्रॉम इट becomes inspired, फुल स्टॉप। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, आपको काम आएगा। द पोएट wants a cup of genuine and richly colored wine that should be as inspiring to him as the water of the Hippocrene, 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 comma, the fountain of muses on Mount Helicon, full stop। ये आपको वहाँ पे जो लाइन है उससे समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज बीडेड बबल्स। तो बीडेड बबल्स मतलब बबल्स लुकिंग लाइक बीड्स, बबल जैसा आपको पता ही है, बुलबुला होता है, वो जो बुलबुले से उठते हैं पानी के, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ग्लास में उंडे लें तो ऊपर वो झाग सा और कुछ कतरे से ऊपर उभर आते हैं, दैट इज बबल। बीड इज अ स्मॉल बॉल, जैसे बीड्स ऑफ रोजरी आपने पढ़ा होगा वो, तो लुकिंग लाइक बीड्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज विंकिंग, WINKING, विंकिंग। इसका यहाँ पे मतलब है स्पार्कलिंग, और फॉर्मिंग और ब्रेकिंग, यानी बनते हैं और फूटते हैं बुलबुले, फॉर्मिंग और ब्रेकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिम, BRIM, ब्रिम, which means the upper edge of the cup. Next expression is purple stained mouth. देखिए, इसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको मालूम है। स्टेन्ड मतलब स्पॉट, स्टेन कहते हैं धब्बे को, पर्पल कलर को कहते हैं। तो पर्पल स्टेन्ड माउथ से क्या मतलब है यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए। रेफर्स टू द माउथ ऑफ द पर्सन हु ड्रिंक्स, comma, his mouth becomes purple by the reflection of the color
of wine, of wine, by the reflection of the color of wine. तो जो पीता है, जो ड्रिंक करता है, उसका भी फेस पर्पल हो जाता है और ग्लास में रिफ्लेक्ट भी करता है पर्पल कलर का. दैट इज पर्पल स्टेन्ड माउथ. फेड, फेड का मतलब है यहाँ पे गो अवे. वैसे तो आपको मालूम ही है फेड मतलब मुरझाना. फॉरेस्ट डिम, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉरेस्ट डिम. दैट मीन्स डार्क फॉरेस्ट. अब एक एक्सप्रेशन है फेड फार अवे. फेड फार अवे, इसका एक्सप्लेनेशन या इम्प्लाइड मीनिंग लिख लीजिए. कंप्लीटली फॉरगेट, completely forget the world of reality, the world of reality around him. Around him, full stop. Dissolve, dissolve के माने हैं मेल्ट इनटू नथिंगनेस. वैसे इसके माने मेल्ट करने के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड है मेल्ट इनटू नथिंगनेस. या forget his existence. Forget his existence. Next expression is weariness. Weariness कहते हैं feeling of being tired, feeling of being tired or being fed up. यहाँ पे मतलब or being fed up with the suffering of life. Fever. Next expression is fever. This means feverish activity of human life. Feverish activity of human life. Then the next word is fret. F-R-E-T. This means irritation, restlessness, frustration. Groan, G-R-O-A-N, groan. Complain against, the miserable lot of their life. Next is palsy. P-A-L-S-Y. Palsy. This means paralysis
paralysis or a disease in which some part or parts of the body PARTS यानी some part or parts मतलब एक हिस्सा या कई हिस्से of the body lose strength and cannot be moved. And cannot be moved. Then we have the expression gray hairs. Gray hairs here mean old people. Then the next expression is spectre thin. SPECTRE, spectre -thin. This means extremely thin. Extremely thin. Spectre के माने लिख लीजिए, literal meaning. Spectre means a ghost, GHOST, ghost. Thin, THIN, thin. That is thought to be seen but has no material existence. Thought to be seen but has no material existence. मतलब स्पेक्टर स्केलेटन को समझ लीजिए या ढांचा या एक तरह का जिसे कि आप आम लफ्ज़ों में कह देते हैं भूत, मतलब जो जिसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता मगर दिखाई दे जाता है. तो स्पेक्टर थिन मतलब वेरी थिन, एक्सट्रीमली थिन, बस सिर्फ इतना ही मतलब आप समझ लें. देन ये एक्सप्रेशन है बट टू थिंक. बट टू थिंक which means just thinking about the world or a thought of it Next expression is leaden eyed. LEADEN, leaden eyed, EYED, eyed. मतलब as heavy as lead. Lead is a metal, the heaviest metal. So leaden eyed means eyes as heavy as lead. अब ये पूरा फ्रेज का मीनिंग लिख लीजिए. लेडन आइड डिस्पेयर. लेडन आइड डिस्पेयर मतलब ग्रेट डिस्पेयर. व्हेन अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये भी नोट कर लीजिए. व्हेन अ पर्सन वीव्स टू मच, when a person weeps too much, the eyelids become heavy and it becomes difficult to open the eye. To open the eye.
तो लेडे नाइट डिस्पेयर से मतलब ग्रेट डिस्पेयर है, एंड वील डिस्कस दिस फ्रेज इन डिटेल व्हेन वी डू द पोएम. ओके, ब्यूटी विद कैपिटल बी. ब्यूटी से यहाँ पे मतलब है अ ब्यूटिफुल वुमन. अ ब्यूटिफुल वुमन. In fact, beauty is personified as a young, beautiful woman. Young, beautiful woman. Lustrous. Lustrous means shining, sparkling, bright. Shining, sparkling, bright. अच्छा, लव विद कैपिटल एल. लव से यहाँ पे मतलब है लवर्स, यंग लवर्स. Then the next expression is pine. P-I-N-E, pine. Pine means to have a strong desire for. To have a strong desire for. To hanker. H-A-N-K-E-R. Hanker का भी मतलब यही होता है, strong desire. To hanker. H-A-N-K-E-R. और long for. Love eagerly. ये एक और इसका एक्सप्लेनेशन है. या वेस्ट अवे फ्रॉम देयर लव. किसी न किसी तरह से ये सारे मीनिंग्स वेस्ट अवे फ्रॉम देयर लव, किसी न किसी तरह से ये सारे मीनिंग जो हैं वो अप्लाई होते हैं यहाँ पे. जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे. अच्छा, नेक्स्ट इज बियॉन्ड टुमारो. ये बियॉन्ड टुमारो या बियॉन्ड मोरो जो भी एक्सप्रेशन है, बियॉन्ड टुमारो विच मीन्स बियॉन्ड नेक्स्ट डे. ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख लीजिएगा. दे विल बी लव्ड only for a day, as by the next day they will no longer remain beautiful. Remain beautiful. यानी इसमें ये ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया है एज अ ब्यूटीफुल वुमन. ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज. यानी ब्यूटी जो है, फिजिकल ब्यूटी, वो इस वर्ल्ड में इतनी भयानक वर्ल्ड है, इतनी फुल ऑफ सफरिंग है कि वो सरवाइव नहीं कर सकती. द ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग इन दिस वर्ल्ड. और ये भी है कि द यंग लवर्स डू नॉट गेट अ चांस टू लव ब्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो फिजिकल ब्यूटी एंड फिजिकल लव. अच्छा, अब आ जाइए हंग्री जनरेशंस. हंग्री जनरेशंस से मतलब है ह्यूमन बीइंग्स, generations of human beings. The expression the voice here means the song of the bird.
द वर्ड एम्परर, एम्परर आया यहाँ पे, एम्परर, इट सजेस्ट the people of the rich upper class. The people of the rich upper class. The next word is tread. T-R-E-A-D, tread. तो tread का मतलब यहाँ पे है crush, crush. Then the next expression is clown. C-L-O-W-N, clown. Clown here refers to common people. Next expression is self-same. Self-same मतलब the very same. Now there is an allusion, एक रेफरेंस है जो कैरेक्टर है बाइबल में उसका, रूथ, R-U-T-H, रूथ. इसके बारे में कुछ नोट कर लीजिए. Ruth decided to go with her mother-in-law after the death of her husband she worked in the farms of a kinsman, K-I-N-S-M-A-N, kinsman मतलब फार्मर जिसे बोलते हैं, किसान, named Boaz, B-O-A-S, Boaz. अच्छा, ये तो रूथ के बारे में हो गया. बाकी हम जब पोएम डिस्कस करेंगे तब इसे डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एलियन कॉर्न, A-L-I-E-N, एलियन, कॉर्न, C-O-R-N, कॉर्न. एलियन कॉर्न से मतलब है फॉरेन कॉर्न फील्ड्स, या यूं कह लीजिए कॉर्न फील्ड्स इन अ फॉरेन लैंड. Cornfields in a foreign land. Next expression is amid. Amid is in the middle of. Charmed. Next expression is charmed. To charm is to delight, or to bewitch, B-E-W-I-T-C-H. bewitch मतलब जादू डाल देना. अच्छा, next expression is magic casements. Magic casements.
इसका मतलब है द विंडोज ऑफ अ पैलेस, द विंडोज ऑफ अ पैलेस या द विंडोज ऑफ अ मैजिकल पैलेस, the windows of a magic palace, the windows of a magic palace in fairyland, the windows of a magic palace in a fairyland. You see, there is a reference to the Middle Ages. The Middle Ages start in Europe from 1066 and continue up to 1400. Now this was the time of superstition, magic. रिलीजन में भी बहुत सारे बिगाड़ आ रहे थे, मैजिक सुपरस्टिशन में लोग बिलीव करते थे, ग्रीक लर्निंग कुछ को नहीं मानते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। तो कीट्स ने वही रेफरेंस दिया है कि मिडिवल एरा में जब लवर्स को मैजिक केसमेंट्स में कैद कर लिया जाता था और वो अकेले होते थे, वहाँ पे मैजिक पैलेसेस होते थे, एक्चुअल पैलेसेस नहीं, मैजिक पैलेसेस में मैजिक केसमेंट्स में, विंडोज़ में उनको कैद कर लेते थे लवर्स को, तब भी नाइटिंगेल के सॉन्ग ने उनको सुकून पहुंचाया है। तो वी डिस्कस दिस व्हेन वी डू द पोएम। पेरिलस सीज, PERILOUS, पेरिलस सीज, SEAS, स्टॉर्मी और डेंजरस सीज, स्टॉर्मी और डेंजरस सीज। Full stop. Next word is forlorn. FORLORN, forlorn, मतलब lonely, with no one near about. अच्छा, the next expression is to toll me back. To toll me back is, इसके माने है to toss me back, to bring me back. To toss me back or to bring me back. अच्छा, टॉल के लिटरल मीनिंग भी लिख लीजिएगा। TOLL, टॉल, इसके माने होते हैं कॉज द बेल टू रिंग, cause the bell to ring with uniform strokes, with uniform strokes. और एक इसका मीनिंग होता है द बेल टोल्ड on account of a person's death. The bell tolled on account of a person's death. इसीलिए आपने फ्रेज सुना होगा डेथ टोल, जैसे द डेथ टोल हैज रिजन टू 500। TOLL, टोल, मतलब कि ये हियर इट मीन्स मरने वालों की तादाद, टोल
यानी जब लोग मर जाते हैं तो चर्च में बेल बजाई जाती है, उसको भी टोल कहते हैं। तो टू टोल मी बैक, ये पोएट ने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है, यानी टू ब्रिंग मी बैक, टू टॉस मी बैक। यानी इमेजिनेशन में पोएट नाइटिंगेल के साथ होता है और अचानक जैसे ही वो उसके मुंह से वर्ड फॉरलॉर्न निकलता है तो वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। तो इस वर्ड से वो अपनी दुनिया में वापस आता है। सोल सेल्फ नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये, सोल सेल्फ। दिस मीन्स सॉलिटरी लाइफ ऑफ द पोएट। Solitary life of the poet. Next expression is adieu. A-D-I-E-U. Adieu. इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो या तो एस लगा देते हैं आखिर में या एक्स, लेकिन ये बोला जाता है हमेशा अड्यूज प्लूरल में, अड्यूक्स नहीं कहते अगर एक्स भी लगाएंगे तो अड्यूज कहेंगे। एनीवे, इट मीन्स गुड बाय। अच्छा, फैंसी हियर मीन्स इमेजिनेशन। कैनॉट चीट, इसके बारे में लिख लीजिए। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? कैनॉट चीट, कैनॉट मेक द पोएट फॉरगेट, कैनॉट मेक द पोएट फॉरगेट the reality of life, the reality of life. Then the next word is elf, E-L-F, elf. Elf means a fairy or a spirit. A fairy or a spirit. अब ये एक सेंटेंस लिख लीजिए। सो फैंसी इज प्रेजेंटेड एज अ फेरी, यानी फैंसी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। इट्स प्रेजेंटेड एज अ फेरी who cannot make him forget, him से मतलब poet, who cannot make the poet forget the truth of life. Next expression, the plaintive anthem. The painful song of the bird. Now please keep one thing in mind, that this same song gives great joy to the poet, but at the end he calls this song plaintive or sad, painful or sad song. So it's called sad because now the poet, in his imagination, the poet or the bird is moving away from the poet. यानी उसके ख्यालों में जो बर्ड है वो दूर जा रही है, उसका सॉन्ग उसे ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है. So because he is coming back to reality, so he feels as if the bird's song is sad. यानी वो bird, he is getting farther and farther from the bird. Bird से दूर होता जा रहा है. Fades, F-A-D-E-S. Fades मतलब gradually becomes slow and finally dies. Beyond. Beyond मतलब past. P-A-S-T. Sorry.
Actually, there is the word past, which means beyond. Sorry, very sorry. P-A-S-T, past. Past means beyond. Up next word है fled. F-L-E-D, fled. Gone away. Fled means gone away. That music. That music से यहाँ पे मतलब है the musical song of the word of the bird. Next expression is meadow. M-E-A-D-O-W, meadow. This means a piece of grassland, especially one used for grazing. इसको पास्चर भी बोलते हैं, P-A-S-T-U-R-E, यानी चरागाह. Next word is glade. G-L-A-D-E, glade. It means clear open space, or passage between the forest trees. Now the next word is vision. Vision. इसका मतलब thing or person seen vividly in dream, trance, T-R-A-N-C, trance, or imagination. देखिए, ट्रांस उसे कहते हैं कि जब वज्द का आलम हो जाता है, जैसे सूफिया पे वज्द का आलम हो जाता था, झूमने लगते थे, उन्हें ये पता नहीं होता था कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. अगर आप उस कंडीशन में उन्हें कोई तकलीफ भी पहुंचाएं तो उस तकलीफ का भी एहसास नहीं होता था, जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे वो. तो इस तरह से ख्यालों में अगर एकदम से किसी को कोई चीज़ नज़र आती है तो दैट इज़ अ विजन. Now please also quickly note down some words which you will encounter in introduction to the poem or questions. So one word is verbal. Verbal means oral, O-R-A-L, oral, या of the word. तो इसमें एक्सप्रेशन है वर्बल पिक्चर्स. वर्बल पिक्चर्स मतलब ओरल पिक्चर्स या वर्ड पिक्चर्स. कुछ वर्ड्स पोएट ने ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि यू कैन ऑलमोस्ट विजुअलाइज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. एक इंट्रोडक्शन में वर्ड दिया है उन्होंने बावर, B-O-W-E-R, बावर. प्लेस क्लोज्ड इन with foliage, F-O-L-I-A-G-E,
place closed in with foliage, यानी कि ग्रीनरी और फ्लावर्स से कवर्ड जो प्लेस हो वो फोलिएज होती है। अब इसको आर्बर कहते हैं, बार कहते हैं, सॉरी बार, नाइटिंगेल्स बार। इसकी इमेज पोएट ने डेवलप की है, लेकिन ये पूरी पोएम आपके कोर्स में नहीं है। वो पोर्शन जो पोएट जिसमें ये इमेज डेवलप की गई है वो डिलीटेड है, आपके अब्रिज्ड पोएम, अब्रिज्ड वर्जन है, तो वो नहीं है, लेकिन द पोएट हैज़ डेवलप्ड दिस इमेज। देन द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रस्ट, sorry, very sorry, the word is plunge, plunge, which means to thrust a person into a condition, action, etc. यानी गुम कर देना, पर्सन और कंडीशन एटसेट्रा। इमर्स, इमर्स कंप्लीटली, IMMERSE, इमर्स कंप्लीटली, यानी ये पोएट मतलब प्लंज से मतलब है कि डूब जाना। तो द नाइटिंगेल सॉन्ग, व्हाट डज इट डू? इट प्लंजेस द पोएट इन a reverie, in a state of ecstasy, in extreme joy. अच्छा, एक वर्ड है elusive, ELUSIVE। elusive के माने, ये वर्ड elude से आता है और इसके वैसे बहुत से मीनिंग है, लेकिन जैसा कि हमने पहली पोएम में देखा था, एल्यूसिव नेचर ऑफ पीकॉक, तो एल्यूसिव से मतलब होता है एस्केप a person's grasp or understanding, escape a person's grasp or understanding. So these are the difficult words. Now in the next video I will dictate the theme, discuss the theme and introduce the poem to you, and I'm going to record the video just now. So see you in the next video. Thanks a lot. Stop recording video, but